Dear students, let us start the second part of reproduction in animals. Now in this part we are going to discuss about the egg-laying animals. Now what are the egg-laying animals? Egg-laying animals means birds, fish, bee, frog, turtle. They are the egg-laying animals. These animals lay eggs, ठीक है, अंडे देते हैं, and then keep them on warm place or sit on them to keep them warm. इसको गर्म रखने के लिए ये उनके ऊपर बैठ जाते हैं. This process is called hatching, and during that hatching process the egg becomes matured, means egg के अंदर baby develop हो जाता है, and after maturity that baby comes out of them by breaking the outer covering. बाहर का जो कवर होता है उसको तोड़ के बेबी बाहर निकल जाता है, and the entire process is called hatching. So I have already said you that is the examples of egg laying animals are bird, fish, turtle, bee and frog. Okay, now let us see the images, picture of these animals. Yes, you can see chameleon is there, duck is there, it is a different type of duck, and then frog, and then peacock, again duck, snake, fish, turtle and hen. And this is also called a different type of bird. I don't remember its name. Find out the name of this type of bird. Okay, so these all animals lay eggs. ये सारे के सारे animals अंडे देते हैं. Okay, you now see the hatching of egg. I have given you two pictures. In one picture, hen is sitting on the eggs, so that hen is keeping the eggs warm. गरम करके रखते हैं इसको. तो when that egg becomes warm for so many days, they keep it for so many days, and during this process what happens, the baby develops inside the egg. Okay, and then the baby comes out when it becomes mature. It comes out by breaking the shell. Okay, now the structure of egg. The structure of egg is you can see here in the image, outer covering is there, middle part is there, and your between the middle part and outermost shell there is egg white is there. Okay, egg white is there. So now see, outermost part is called shell. Outermost मतलब सबसे बाहर का उसको बोलते हैं shell. Middle part is yolk, ये yellow color का होता है, and between shell and yolk albumin is there. It is white jelly like substance. ये white color का होता है, jelly जैसा होता है. Jelly खाते हो ना, chocolate जैसा. It is jelly is a sweet substance, and usually kids like to eat. बच्चों को बहुत पसंद आता है jelly. Red, yellow, green color के jelly मिलते हैं market में. Okay, तो उसी तरह के jelly जैसा substance होता है. Now that is the albumin. Okay, egg, outer shell और yolk के बीच में ये albumin होता है. Okay, now what are the functions? Shell क्या काम करता है, yolk क्या काम करता है, albumin क्या काम करता है. Now let us discuss the functions. Functions of the parts of eggs. ठीक है, इसमें shell का function क्या है? Shell is hard covering, protects the developing baby. Developing baby मतलब when hen sits on the eggs. जब उसको गर्म करके रखता है तो उस समय क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंदर बेबी डेवलप होना शुरू होता है. ओके, सो एंड दैट बेबी इज प्रोटेक्टेड मतलब बचा के रखना, प्रोटेक्टेड बाय द शेल. उसके बाद यॉक है, येलो पार्ट. यॉक इज रिच इन प्रोटीन. ओके, रिच इन प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. You must have studied in third standard. Third standards में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब पढ़ाया हुआ है. Okay, you have to remember that. ये सारे के सारे nutrition present in the yolk and provides nutrition to developing embryo. Embryo मतलब baby. छोटा baby को क्या बोलते हैं? Embryo बोलते हैं. तो embryo जब बड़ा हो रहा होता है ना, तो उसको nutrition चाहिए होता है. जैसे हम बड़े होते हैं तो हम खाना खाते हैं, nutrition लेते हैं. Similarly, those baby developing embryo needs the nutrition. तो वो nutrition कहाँ से आएगा? यॉक से. यॉक उसको क्या देगा? प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सारी की सारी चीजें यॉक से बेबी को मिलेगा, तो बेबी बड़ा होता जाएगा.
एम्ब्रियो लाइज इनसाइड द यॉक, येलो पार्ट के अंदर के बीच में, अंदर में एम्ब्रियो होता है। बुक में देखना पिक्चर, उसके बीच में एम्ब्रियो है, ओके। एंड विच लेटर डेवलप्स टू इनटू द चिक, जब एम्ब्रियो बड़ा हो जाता है तो वो छोटा बेबी बन के निकलता है, जिसको चिक बोलते हैं, ओके। एल्ब्यूमिन rich in proteins and protects the yolk and the embryo. Here this I have a typo mistake, albumin, min, okay. Rich in proteins and protects the yolk and embryo. Albumin जो white jelly substance है वो भी protein rich है, लेकिन और ये क्या करता है, yolk और embryo दोनों को protect करके रखता है, okay. Now you can see I have made some words in bold letters. So those words you have to write in the notebook and you have to find out the meanings. Okay? मैंने meaning explain तो कर दिया है, लेकिन आपको ये सारे words notebook में लिखने हैं और याद रखने हैं. Okay? Thank you.